Hi, Sarthak. Good evening. Hi, Sarthak. Good evening. Audio is on now. Yes. Harsh, good evening. Manish, hi. Ganpat, Jai Hind. Shubham, Jai Hind. Arin, Jain, hello. NSV, good evening. Anjana, good evening. Prashant, Jai Hind. Hi, Tushar. Deepak, good evening. Soumyadeep, Jai Hind. Cassius Clay, Muhammad Ali's former name. Good evening. Pallavi Kumari. Good evening. Height 153 है. लोग सेलेक्ट करेंगे एसएससी टेक विद लड़की है नहीं. करेंगे 152 होता है जस्ट पास कैटेगरी होगा मेरी भी हाइट कम है इसलिए मुझे भी ध्यान रखना Okay. पड़ता है हर्ष राजपूत. Good evening. Manan. Good. Hi. Okay. Before I start taking your questions, few important pieces of advice from my side. You see, when the selection started, system started working, there were no coaching academies at all. And some of the aspirants who attended SSBs in those days got selected. And they were selected because they were meeting the criteria of selection that they were found fit to be trained to become officers. The selection criteria are exactly the same today as they were when the first SSB took place. So, hypothetically speaking, the candidate who attended the first SSB, if he attends SSB today in April 2024, he would be selected. Fine. Now, in between, a large number of coaching academies have come up. And in their efforts to try and help you people out, they have provided you a large amount of misinformation. And the major problem they have created is that they have brought your focus onto the SSB process rather than holistic personality development. The requirement overall is how you are overall. To put it simply,
In case an aspirant is a student, then if he or she is a good student, then his or her chances of selection would be good, provided the person is also having decent GK and decent level of physical fitness. And in case the person is a worker, if he or she is a good worker and physical fitness and GK are okay, then the person will get selected. So these are the major criteria for selection. In case a person gains great expertise in the knowledge about the selection process, the maximum increment a person can make in his or her chances of selection is not more than 5%. So most of you aspirants are wasting your time and energy in trying to gain an increment of 5%, which is actually minuscule, and neglecting the 95% part. In No Frills Academy, we focus on the 95% part. Now, having worked in the SSB and now guiding students for almost 10 years, I have realized that in case an aspirant focuses on four things, then his or her chances of selection would be good. Namely, the most important thing for a student is academic knowledge, and for a worker, it will be work knowledge. So these things, you take it, assign it a weightage of approximately 35% in your selection chances. Next comes the attribute of your communication skills. Allocate it a weightage of approximately 30%. So academic ability plus communication skills cater for approximately 65%. Physical fitness is the next criteria that should be allocated a weightage of approximately 20%. So, academic competence, communication skills, and physical fitness account for 85% overall. The balance 15% weightage should be allotted to the aspirants' general awareness. That takes care of 100%. So, if you focus on these four things in the weightages that I have explained, then your chances of selection at the SSB would be good. And the Balli Patta stuff and all that, that is of 5% significance. Nothing major at all about it. Fine. So you people are wasting time. That's why I'm telling you these things you should do that will benefit you overall in the long run. And you see there is evidence from the performance of aspirants who have joined No Frills Academy. I had recently a person named Subhita Rawat from Ordnance. He had been attending SSBs since long. He joined our program, and in a matter of couple of months, he was recommended twice. We've had aspirants getting recommended in the 19th, 20th, 21st attempts because they got their sense of priorities right and they got success. Fine. So, with this as background, I'm ready to take your questions. So, Yogita, what's the first question? Sarthak Sood is asking, Sir, my SSB is on 28th of April. Which topic should I prepare for GD and ED? अच्छा, ये बड़ा typical question है. And I don't blame you, Sarthaka. I got used to this. देखो यार, आप हो पूंजी जनरेशन. आप कहते हो मैं एफर्ट नहीं करना, मैंने अवेयरनेस वगैरह इंप्रूव नहीं करनी, मुझे चाहिए एग्जैक्टली इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या सवाल पूछने वाला है और एग्जैक्टली मुझे वो पर्ची चाहिए जो कि जीटीओ की लिखी हुई है जिसमें जीटी के टॉपिक्स हैं और लेक्चरेट के टॉपिक. ये तू मुझसे जानना चाहता है. भाई देख सार्थक, ये इन्फॉर्मेशन मैं दे नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है और कोई भी नहीं दे सकता. मेरा सुझाव आपके लिए बेटा ये है कि ये शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ना जिंदगी में फॉर गॉड सेक छोड़ दो. इससे आपका लॉन्ग रन में भला बिल्कुल भी नहीं होगा, नुकसान डेफिनेटली होगा. ठीक है ना. ओवरऑल इंप्रूव करो अपनी जनरल नॉलेज. टॉपिक्स नहीं पता हो सकते आप. ठीक है. डोंट ट्राई टू डू दैट. क्या
फिर हाँ वही बात है, आप एग्जाम से पहले भी कोशिश करते ही हो कि एग्जैक्टली वही पता चल जाए क्या आने वाला है एग्जाम, कहीं से पैसे दे के लोग लेते हैं ये पर्चे। दैट्स अ बैड वे। देखो यार, जो नॉलेज आपको जिंदगी में हेल्प करती है, वो नॉलेज है जो कि आपके पास एग्जाम के बाद रह जाती है। जिंदगी में तो वो काम आ रही है ना, कुछ मग अप किया, उसको वॉमिट आउट किया, वो नॉलेज हेल्पफुल नहीं है। बट आपका फोकस उसी पे है। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? ठीक है सार्थक? या कैन वी हियर यू सार्थक? No, we can only see his response. अच्छा, अच्छा, you can only see his response in this video. Manish is asking, Yeah. Sir, I have my AFSB on 15th. It's my first SSB. I want to make it a last one. बड़ी Please अच्छी बात है। mention some do's and don'ts. डूज़ डोंट्स वगैरह ऐसे देखो यार, फिर वही आप कुंजी चाहिए, कुंजी है नहीं मेरे पास, ठीक है ना? 4 चीज़ें मैंने बताई, 4 चीज़ों को 15 तारीख तक आप इम्प्रूव क्या कर लोगे? जो है वैसे ही है। तो अब ये जो थोड़ा-सा टाइम रह गया है, इसमें द मेजर थिंग व्हिच यू कैन इम्प्रूव अपॉन इज जनरल अवेयरनेस। बाकी कोई भी चीज़ आप खास इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो वो कर लीजिए। ओआईआर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना? जिससे उसमें परफॉर्मेंस ठीक हो जाए। हमारा वीडियो देख लीजिए स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में, पीपीडीटी वगैरह में क्या ख्याल में रखना है चीज़ें। Do these things. This is about all what you can do. Fine. And good luck to you. Yeah, thank you. Sir, NSV is asking, Sir, how to make others listen to our points in group discussion? हाँ, गुड पॉइंट। देखिए क्या है, एक सच्चाई ये है एनएसवी कि हमारा टोटल कंट्रोल जो है अपने थॉट्स और एक्शंस के ऊपर ही है। दूसरों के थॉट्स और एक्शंस के ऊपर नहीं होता। मैं जो बात कह रहा हूं उसे आप लोग ध्यान से सुने, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में तो यही है कि मैं कम्युनिकेट इफेक्टिवली करूं। अगर मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट करूंगा तो मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोग ध्यान से मेरी बात सुने। दैट इज ऑल आई कैन डू। बैलेंस, क्योंकि आपके एक्शंस आपके हाथ में है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So once again, it comes to that you should improve your communication skills and your knowledge level. तो जीडी वगैरह में अगर आप सेंसिबल बात करोगे, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी अच्छी होगी, तो आशा की जा सकती है कि लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो नहीं सुनना चाहते हैं, तो आई मीन यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। ठीक है ना? यू कैन ओनली कंट्रोल योर साइड ऑफ द थिंग। ठीक है ना? वही सिंपल सी बात है जो आता है ना कि कर्म करो, रिजल्ट पे, फल पे तो आपका कंट्रोल है ही नहीं। फाइन? या थैंक यू। Sir, Anurag Yadav is asking, does social media affect our psychology? Should I? अफेक्ट मतलब एवरीथिंग अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, हाउ वी वर्क। तो कितना इन्फ्लुएंस न्यूज़ का है, कितना इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स का है, कितना इन्फ्लुएंस आपके घर के एनवायरनमेंट का है, आपके स्कूल कॉलेजिंग के एनवायरनमेंट का है, आपके फ्रेंड सर्कल का है। जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस तो है ही। सोशल मीडिया में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग यू इन सम वे डेफिनिटली। तो पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह का तो वो तो देखने की बात होगी। तो क्या है, सोशल मीडिया इज़ अ थिंग, सोशल मीडिया से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। इट इज़ वर्थ इट। लॉट ऑफ वेरी वैल्यूएबल थिंग्स आर देयर। लाइक आई प्रैक्टिकली don't listen to the mainstream media at all because in my view it is junk absolutely। टीवी वाला न्यूज़ बकवास है। I follow it on YouTube। मेरा इन्फॉर्मेशन वहीं से है या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स देखता हूँ। ठीक है? तो इन्फ्लुएंस तो है ही, पर आपका स्पेसिफिक आप क्या जानना चाहते हैं, probably I have not understood। ठीक है? So this is a statement of fact that it is affecting your and my lives definitely। Yeah, thank you।
Sir, Manan is asking, sir, my 12th has just ended. I am going to give my NDA 1. However, I feel I will need to repeat my 12th. As sir, can I give my NDA 2 attempt while repeating 12th? नहीं, अगर एज परमिट करती है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो कर लीजिए आप, उसमें क्या दिक्कत। एज क्या ही तो इशू होता है इसमें, एनडी के एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास होनी चाहिए और एज आप होने चाहिए द एक्सेप्टेबल एज ब्रैकेट, यू कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। फाइन, या थैंक यू। Sir, Manish is asking, sir, what is the difference between TAT and PPDT? I mean, why the words are used perception in PPDT and thematic appreciation in TAT? It is not appreciation, it is a perception. A perception. Appreciation is a Sorry, different sorry. word. तो देखिए, आप बाल की खाल मत निकालिए, आप ये देखिए आपने करना है क्या है। वैसे आपके लिए भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यू सी, एज आई सेड कि व्हेन द फर्स्ट एस्पिरेंट वेंट टू अटेंड एसएसबी, द पर्सन डिड नॉट नो कि क्या होने वाला है। उसको जो साइकोलॉजिस्ट ने बताया वो उसने सुना और वो कर लिया, दैट्स इट। Anyway, now that you have raised this question, think is that differences are there. पीपीडीटी होगा आपका स्क्रीनिंग में, और पीपीडीटी के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि टीएटी के नहीं है। First thing is, in the PPDT, you are given a paper in which you have to mark the number of characters with their locations, and you have to write their gender, age and mood. ठीक है ना? This is not a requirement of TAT. वहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज। And also you are required to write the action, बोलते हैं इसको। I don't know why they use this word action, but है the primarily the thing action का मीनिंग है कि इसका जो आप स्टोरी लिख रहे हो वो थीम क्या है, टाइटल क्या होगा। ठीक है ना? तो वो जो है, ये दो चीजें हैं जो कि पीपीडीटी में करने की है, और टीएटी में ये चीज करने की नहीं है। टीएटी में आपने सीधी स्टोरी लिख दी। फाइन, तो दिस इज व्हाट इट इज। बाकी ठीक है, बाकी तो सेम चीज है। और हाँ, पीपीडीटी में आपको नरेट करना पड़ता है, आपको जाके ग्रुप में बैठकर अपना स्टोरी, एंड देन रिक्वायरमेंट इज देयर टू अराइव एट अ कंसेंसस स्टोरी। फाइन, आप हमारा वीडियो देखिएगा स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में, इट विल हेल्प यू अ लॉट in getting clarity के हो क्या रहा है, and also what you should be doing to get screened in, or rather increase your chances of getting screened in. Right? Thank you. Sir, Prunjoy Singh is asking, sir, I recently got merit out in NDA, feeling little disheartened. How should I figure out what went wrong? Don't figure out anything went wrong because you were selected. That means you are okay. For next attempt, to ensure that you get merit in, first thing, focus on better performance in the written exam, because that will play a major role in merit. So do that. And if your academic competence goes up by some degrees, then it is taken that your performance in SSB would also improve to some extent. After all, academic competence plays a role in the SSB as well. अब राइटर इंडिविजुअल जिसकी कॉम्पिटेंस ज्यादा अच्छी है, उसको असेसमेंट के चांसेस वहां बेटर ही होने चाहिए। सो दैट वे यू विल इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू मेरिट। कोई इंट्रोस्पेक्शन और वो बड़ी कहानी नहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? या थैंक यू। Suraj Kumar is asking, sir, what is the inference of PIQ form in psychology test especially? Do we need to bother about it? Means does a psychologist checks PIQ form and नहीं, infer चेक तो करेगा ही, तभी तो बार बार है। जीटीओ के पास नहीं जाता है पीआईक्यू फॉर्म, साइकोलॉजिस्ट के पास भी आता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास आता है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर के लिए तो बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि वो उससे ही
he formulates his questions basically क्या है. And since I was an interviewing officer, I have been using the PIQ form to do that. अब आप जान के क्या करोगे इस चीज को? They are not going to help you. Suffice to say that fill up the PIQ form with genuine information. Do not try to impress by things like hobbies, interest में बढ़ा चढ़ा के बात करना. ये भी था, ये भी करता था, ये रीडिंग मेरी है हॉबी थी और इतना पढ़ा है ऑल दैट. जो सच सच बात है उतना ही लिखिए, उतना ही बताइए. इम्प्रेस करने के चक्कर में मत रहिए. देखिए, सिविल वर्ल्ड में एक सीवी चलता है, उसी का जो है इक्विवेलेंट है हमारा पीआईक्यू फॉर्म. वहां पे कल्चरली people do try to impress by the CV. In SSB, nobody is getting impressed by your PIQ form. They will get impressed if you are genuinely impressive. Otherwise, they will not. तो इसमें भरने वरने से कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी. झूठ प्लीज मत पढ़िए, एग्जैजरेट मत करिए, सही सही बातें लिखिए. दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू. थैंक यू. Sir, Sagar Kumar is asking, sir, I will be completing my BCom this year. After that, I will be taking a drop for CDS and CAT preparation. I will be doing certification for my upskilling. Is this a good approach? Not that I approve of. I do not approve of any drops. Things should be done in routine, right? And if you are needing to take a drop, it is an indicator that your competence is not up to the mark. जरूरत नहीं है. साथ साथ ही उसके हो जाना चाहिए. The time you get clear your CDS and AFCAT exams, and most of the decent students are able to do that without going in for any such drop or any such. ठीक है ना? Is that correct, Yogita? Did you ever think of taking a drop ever? No, I was continuously working, but not as in a satisfactory work. That I can admit. No, Yeah. but did you have to take out time to prepare for these exams separately कि खाली बैठ के करो? नहीं. नहीं था ना ऐसा ही तो. Like I also did not have some 20 days or so. I remember I had, and that was good enough to sort out the things of GK, CK. तो इतना ही कुछ पढ़ने की जरूरत थी. बाकी तो क्या होता है, इंग्लिश the NDA का एग्जाम था, and NDA is supposed to be the more difficult exam out of all of these. तो बाकी तो पीसीएम की नॉलेज थी ही अपनी, जो भी स्कूल से थी. इंग्लिश की भी थी. जीके एक एडिशनल चीज थी जो कि आपके करिकुलम में नहीं है. उसको थोड़ा बहुत पढ़ के वो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पास पेपर देख के आइडिया लगाया. हो जाना चाहिए. ड्रॉप ऑफ इज अ बैड आइडिया. फाइन बेटा. या आई डोंट अप्रूव ऑफ इट. थैंक यू. Sir, Harsh Rajput is asking, sir, can only news reading improve English communication skills? What should I do in my daily routine? इसी थिंग इज दैट ना, ये स्टॉक आंसर मिल नहीं सकता ना. पहले तो हमको देखना पड़ेगा आपका लेवल क्या है, क्या नीड है, उसके बेसिस में क्या कितना, फिर नीड क्या है, फिर आपके पास टाइम अवेलेबल कितना है दिन में, उसके बेसिस में आप प्लान करके चल सकते हो ना. खाली न्यूज पढ़ना सुनने से तो बात बनेगी नहीं ना. लिखना भी है, बोलना भी है. अगर ग्रुप्स आपके लाइक माइंडेड के हो जाए जिसमें आप ये एक्टिविटीज कर सकते हैं, जीडी, लेक्चर डिलीवरी एंड ऑल, देन दैट वुड बी गुड. तो ये है. उससे अंग्रेजी खाली न्यूज पढ़ने से ही सुधर जाने की बात तो नहीं लगती मुझे. राइट. या थैंक यू. Sir, Shubham Kumar is asking, sir, I have never participated in extracurriculars in my school and college. Do I have a chance of recommendation? Yeah, definitely you have a very high chance of getting recommended so long as you are overall competent and your physical fitness is okay. इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. किया है तो अच्छा है, नहीं किया doesn't matter. Don't get bothered at all. Yeah, thank you.
Ganpat Singh is asking, sir, I am a serving soldier. I use English wherever possible, but I am still not getting recommended. There is one candidate, most of the time he is using only Hindi and he got recommended. यार कोई दूसरा कैसे हो गया है उसकी आप चिंता मत करो। आपको अंग्रेजी सुधारने की जरूरत है, उसके बिना सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि सर्विस में जरूरत पड़ने वाली है नॉलेज की। और इधर भी आप ये देखिए कि भाई एसआरटी हुआ, डब्ल्यूएटी हुआ, वो तो अंग्रेजी में ही करना है। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है, आप वर्ड का मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे, तो रिप्लाई अब गलत हो गए, सेंटेंसेस ऐसे ही बनाओगे या छोड़ दोगे। ये करना पड़ेगा, इसमें शॉर्टकट मत। और गणपत अगर दिक्कत हो रही है, बात अपने से नहीं बन पा रही है, तो ज्वाइन आवर गाइडेंस प्रोग्राम। वी विल गिव यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव अपॉन दीज थिंग्स, बट एफर्ट आपको करना पड़ेगा और टाइम लगेगा, ये झटके से नहीं हो जाएगा। 15-20 दिन, महीने में मुश्किल है चीज। ठीक, टेक टाइम, 3-4 मंथ्स तक का टाइम तो रहना चाहिए। फाइन गणपत, ओके, थैंक यू। Okay. Ayush Sharma is asking, sir, in the interview when Ayo asked about strengths, what should I mention based on past experience? स्ट्रेंथ्स, देखिए वो जब वो पूछते हैं, आप अपने को जब डिस्क्राइब करते हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस भी बताते हैं। तो वही है। अब स्ट्रेंथ्स का जो है इंटरव्यू में बताने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले आपका टेस्ट होता है साइकोलॉजी का, स्क्रीनिंग होने के बाद वहां पे आपने एक चीज लिखी होती है, अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसके लिए आपको मिलते हैं 15 मिनट। तो वहां आपने लिखा है, नो, what your parents think about you, what your teachers think about you, what your friends think about you, then you have written what you think about yourself. तो उनके ही कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स ने सोचा, टीचर्स ने सोचा, दोस्तों ने सोचा, उसी का कुछ निकाल के आप लिखते हो कि ये मैं हूँ। ठीक है ना? आज्ञाकारी पुत्र हूँ, यारों का यार हूँ, टीचर बहुत पसंद करते हैं या टीचर सोचते हैं ट्रबल क्रिएटर, व्हाटएवर जो भी कुछ है, तो वो आपने लिखा है। अब उसमें अगर आप देखिए, सिंपल बात है, अगर आप ओबीडिएंट हैं, पॉजिटिव क्वालिटी है, आप डिसिप्लिन्ड हैं तो पॉजिटिव क्वालिटी है, आप प्रोक्रेस्टिनेटर हैं तो ये नेगेटिव क्वालिटी है, आपकी अंग्रेजी खराब है तो ये नेगेटिव क्वालिटी हुई, आप फोकस्ड एफर्ट नहीं कर पाते तो ये नेगेटिव क्वालिटी हुई। तो ये चीजें जो हैं, ओवरऑल आपके दिमाग में घूमी होगी जब आपने साइकोलॉजी में लिखा होगा, उसके बेसिस में जवाब दे दीजिए। फाइन, बट चीजें वो बताइए जो असल में हो। मतलब समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कि पेरेंट्स कुछ चीज सोच रहे हो आपके बारे में या टीचर सोच रहे हो, बट दैट मे नॉट बी करेक्ट, और करेक्ट नहीं बोलेंगे, यू डोंट परसीव दैट दिस पॉइंट इज वैलिड। ठीक है ना? तो देन डोंट इंक्लूड दैट इन योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है ना? दैट इज व्हाट इट इज। या, थैंक यू। So Shaunak Kulkarni is asking, sir, is there anything like positive and negative sentence in VAT? If the word is light, can I write refraction of light can be studied using glass slabs? हाँ हाँ, What बड़ा, does it, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, आगे क्या है? what does this tell about my personality? नहीं यार, डोंट गेट इट। आप इन चीजों में मत। See, now that you have raised this issue, let me answer you to some extent. Think that नहीं तो फिर कहीं आप दूसरे सोर्स से कुछ information लोगे, quarter baked, half baked and all that, and a lot of people try and think that they're experts in everything. I am not actually. मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे पास सिंपल कॉमन सेंस है, उतने से मैं आपको बताता हूँ। तो ये है कि आप जो है, पहली बात ये रियलाइज करो कि आपका असेसमेंट एक सेंटेंस से नहीं हो जाए। लेट अस से डेथ था, मैंने लिखा डेथ इज इनएविटेबल। ठीक है? एक दूसरे ने लिखा कि डेथ इज एन एक्सटेंशन इनटू नेक्स्ट लाइफ। अब इसके बेसिस पे आप कोई भी मेरे को बड़ा से बड़ा साइकोलॉजिस्ट ला के बिठा दो, वो नहीं डिसीजन ले सकता कि ये आदमी ऐसा है
नेहरू जो बोल रहा है डेथ इज इनएविटेबल, वो ऐसा है। और योगिता जो बोल रही है कि डेथ इज एक्सटेंशन इनटू नेक्स्ट लाइफ, ये फर्क है। कांट डू दैट, ऐसा नहीं होगा। जब वो सारी चीजों को देखेंगे, पूरी 12 स्टोरी, पूरे सेंटेंसेस, पूरे एसआरटी के रेस्पॉन्सेस, फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन, वो सब देख के जो है वो डिसीजन लेंगे कि इसकी क्वालिटीज का असेसमेंट क्या क्या है। फाइन। तो आप इन चीजों की बारीकियों में ना पढ़ो तो आपके लिए अच्छा हो। इट विल नॉट हेल्प यू। कमिंग ऑन टू द पॉइंट, अब आपने डब्ल्यूएटी की बात की ही है, दो चीज का ध्यान रखो। जो भी सेंटेंस बनाते हो वर्ड को यूज करके, उसका मीनिंग सेंस होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज दैट द लैंग्वेज यूज शुड बी करेक्ट। दैट इज ऑल, बाकी कुछ सोचने का जरूरत नहीं। ट्रीट इट लाइक एन एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह कर करके बहुत दिमाग खराब करती है, जो बहुत फाइन। या थैंक यू। Uh, Sir, when Suryanshi Rathod is saying, saw you near Pulse Gym, thought of coming and talking to you, but didn't want to disturb you. अरे You कर are देता, डिस्टर्ब क्या प्रॉब्लम। हाँ, पल्स जिम में रेगुलर जाता हूँ, आज नहीं गया। टुडे आई टुक अ ब्रेक इन द इवनिंग। आई गो टू पल्स जिम। समटाइम्स आई गो ट्वाइस इन अ डे। मॉर्निंग में थोड़ा बहुत कार्डियो कोर स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ, इवनिंग में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। वेरी रेगुलर। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम अराउंड दैट साइड, catch up with me. It'll be my pleasure. Hmm. Hare Krishna is asking, sir, how to handle pressure of the interviewing officer? देखो, आपके कंट्रोल में तो जवाब देना ही है ना सेंस। वो कहेगा टाइम का प्रेशर डालेगा, या आई मीन वट एवर वे इज ट्राइंग टू प्रेशराइज यू। जीटीओ टाइम का करता है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैव देयर ओन मेथड्स। बॉडी लैंग्वेज से दे अपीयर एंग्री या समथिंग, या दे अपीयर एंग्शियस कि तुम जल्दी जवाब दो। तुमने उस प्रेशर्स में नहीं आने का है। तुम अपनी बात इत्मीनान से सही सही करो। दैट इज व्हाट, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, कि यू हैव टोटल कंट्रोल ओनली ओवर योर थॉट्स एंड एक्शन। उनको आप करते रहो, ठीक है ना। इट इज लाइक दिस ना, कि जब आप क्रिकेट तो सारे हिंदुस्तान खेलता है, अब बैट्समैन आगे बढ़ के आता है बॉलर पे प्रेशर डालने के लिए ना, कि फुल टॉस हो जाएगी। पर आपने अपनी बॉल प्लान करके जो जैसे करनी है वैसे करिए, उसको बैट्समैन को करने दो जो एंटिक्स कर रहा है वो। डोंट इग्नोर दैट, ठीक है ना। आई मीन आई एम नॉट सो मच ऑफ अ क्रिकेटर, आई एम अ टेनिस प्लेयर, दैट्स व्हाट वी डू। वो सर्व रिटर्न करने वाला जो भी कर रहा है उसको करने दो। हमने अपना सर्व करना है, जहाँ प्लेस करना है, जो प्लान हमारा स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट करो, दैट्स ऑल। दैट्स व्हाट यू शुड डू इन द इंटरव्यू, राइट? इट विल डू यू गुड टू हैव दिस काइंड ऑफ। या थैंक यू। Sir, Atul Yadav is asking, sir, my job offer got revoked. So will this affect my recommendation? I am still searching for another job. Tech recession. नहीं, देखो वो आपके हाथ में नहीं था ना। आपके हाथ में तो जॉब के लिए अप्लाई करना और ट्राई करना था। अब सिचुएशन ही एम्प्लॉयमेंट की हिंदुस्तान में खराब हो गई, या जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे थे वहां सिचुएशन खराब हो गई, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपना एफर्ट करिए। लाइक वंस अगेन विल कम टू द सेम थिंग, तुम्हारे हाथ में तो अपना कर्म ही है ना। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस पर हम नहीं डिसाइड करेंगे। डिसीजन तो आपके एफर्ट्स पे होता है। आप अपना काम करिए, डोंट बॉदर क्या हुआ। डोंट फोकस एनर्जीज ऑन थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर, ठीक है ना। दैट यू ओनली वरी एंड इट विल बी अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। सो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होने वाला, भला नहीं होगा उससे, ठीक है। या This NSV again is repeating. Sir, answer my query in English. I do not know Hindi. In my last SSB, one guy in our batch was doing his narration in English. He dominated the PPT. PPT interrupted us in GD. Yet he was the only one who got screened in. What did assessor see in him? see, it is uh,
It's a norm I follow. That I do not go about pronouncing judgments upon things of which I do not have complete knowledge. And in No Frills Academy, it is almost a ban to discuss someone else's screening in or screening out or recommendation or rejection because I do not have access to that person's total performance or a video recording of what exactly transpired. I only have access to the information which you are giving to me, which you are presuming is 100% foolproof and total, which uh, it would probably never would be there. Your information which you are giving me can never be 100%. It will be your perception. And I would not like to subscribe to your perception. And based on that, come to decisions. So we don't do these things. In any case, this information will help you not at all. If at all it can help, you get to know that use of English can help you. But since you said that you don't understand Hindi, so you cannot use the English. You will be using English only. You stick with English. That's the requirement. Don't bother. Don't waste your time on such things. Please do what is in your hand. Do it well. Listen to our video about the screening process. That will give you clarity. Follow that methodology. It will work. Right? Yeah. Uh, Niranjan Sahu is asking, sir, I am 2022 pass out BTech mechanical. I didn't took any college placement. Presently not doing a job. I didn't clear CDS or AFCAT also. Can I get recommended ones? Your chances should be low. I would, on the face of it, the information you have given me, it shows that you are quite an irresponsible person. 2 years you're not working, and you have not been able to clear these simple exams. That shows that your competence and your sincerity towards academics is of a low order. And if that is absolutely true, what I am assessing from the face of it, then you should not be selected. And very rightly so. Because let's say, hypothetically speaking, you get selected, you will make a very poor officer. Why should we select you? Should not. So wake up, take up a job, and clear these exams with good marks. Then your confidence will rise, and then your selection chances will also go up. This way, you should not get selected. And your confidence definitely will be low. That's why it is apparent from the question that you are asking me. Fine? Yeah. Hari Singh is asking, sir, I am currently working in IT sector, but I am confused whether should I continue or should I join armed forces. I had been conference out during my NDA attempts. Then this is your personal decision. I cannot legislate to you as to what you should be doing. I took a decision to join the defense forces. That was my decision. I myself don't know whether it was a good or a bad decision. But okay, I took, and that's how life has been. So, in case your aptitude for the IT sector is good and your career advancement and all can be at higher pace, and if you feel it is good, then go for that. And if you feel that you like the way of life of defense forces and all that, then you should take up this job. You will have to decide. ठीक है ना? बाकी the inputs, I mean, you can get yourself. Thank you. Sir, Virtue Movies is asking, sir, I was recommended in my first attempt, but was medically unfit. Then in next attempts, I was screened out 2 times. Should I apply again? You should apply. Listen to the not sorry, read. Listen to the video of one of our students, Jyotsna Pandit. She was recommended once, and I think she did not make it in merit, and then she was screened out 3 times consecutively. Then she joined my program, and thereafter she made it.
and I have been in touch with her. She did very well. She topped some portions in her training at Air Force Academy. So don't get disappointed. If you recommended, that means overall you are quite okay. Maybe your performance or your sincerity or whatever confidence has dipped because of some reasons. Raise it up, get sincere, things will work out. Yeah, thank you. Sir, B. Anand is asking, Sir, I am currently in my fourth year BTech CSE Computer Science. Sir, I am also doing internship. I am not able to manage internship and CDS preparation. Sir, Ah, please share. because you are incompetent, that's why. So get used to working. Serious exam, not big deal. See, people try and make a big deal out of simple stuff. And I am used to the society doing that in so many places in my life. I'm not a kid, I'm 64. So that is there. So you try and make out, your job is the toughest ever created. Bullshit. Clearing CDS is not a big deal. General stuff and GK is the only thing. अंग्रेजी ठीक होना चाहिए. You should be able to clear. And weekends में रहता है यार तुम्हारा 5 day working week होता है mostly कंप्यूटर वालों का. So let us say even on working days you're traveling so much and all that time is not there. वो भी accept कर लिया कुछ भी नहीं कर रहा है तो. On weekends, on a Saturday you can spend about 5-6 hours, and on Sunday you can spend about 3-4 hours. If you can't do this much, that means you're not motivated. Motivated नहीं हो तो फिर होना ही नहीं चाहिए फिर आपका सिलेक्शन तो और क्या. With this much of time, it is possible. Fine, do that, please. Don't think your time will come back. Yeah. Sir, Jia Kumari is asking, Sir, I have cleared my CDS and AFCAT, but I am repeatedly getting screened out. Now I have applied for online jobs like work from home. काम Is this करो, okay? बिल्कुल काम करो. काम करना चाहिए, घर मत बैठे रहो. Join our guidance program. आपको एक्सपोजर मिलेगा, group interaction, these things will help you. Fine. Some tips you will receive from me when I assess you and make you make a daily routine, follow it. छोटी छोटी चीजें कहीं कहीं क्लैरिफिकेशन आते रहते हैं तो उससे फायदा होने की उम्मीद है. That's what you can. Thank you. डिसहार्टन होके छोड़ो मत. Yes. Sir, Sarthak Sood is asking, Sir, my last question. Sir, I have a choice to make. To clear CAT with good percentile and get a good MBA college, or for my passion, for my uniform, where I try for this CDS, SSB and all. Time and money both are constrained. Please advise. Advice तो ये है, I would have gone for CDS. I would not have gone for this CAT score and all. It's not going to make a big shake difference. Management should be done after a person has worked in the field for at least 2-3 years. Before that, people who do management, they lose the significance of their core engineering, which I presume you would also be. तो काम करो पहले, उसके बाद 2-3-2.5 साल बाद सोचना MBA शम्बी करना है. तो फिलहाल तो CDS पे फोकस रखो. That is the better idea. I would have done that. Fine, thank you. Sir, Rishabh Karvaria is asking, Sir, I have been conference out NDA twice. Now I am in my final year of college. I have cleared my AFCAT with good marks. Sir, how should I improve my chances in AFSB? कोई डिफरेंट चीज तो है नहीं. AFSB हो या NDA वाली हो, SSB तो सब सेम होती है. 4 चीजें मैंने बताई, वो इम्प्रूव करिए अच्छे से. ठीक ठाक होंगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. डाउट रह रहा है कि बात बनेगी नहीं बनेगी, क्लैरिटी अबाउट की फोकस ठीक चल रहा है कि नहीं, ऑल दैट, देन जॉइन माय गाइडेंस प्रोग्राम. आई विल असेस एंड टेल यू व्हाट शुड बी द focus areas for you, and you'll get an environment to prepare systematically. Fine. So that's what it is. Yeah, thank you.
Sir, Abhinav Jaswal is अरे पहले इसका लो यार, ये एक for how नेगी to ने prepare कितनी exam. बार लिखा है, कितने I 15 बार, mean, uh, क्या हाउ टू प्रिपेयर फॉर lecture लेक्चर। it. नेगी साहब बहुत बार आपने पूछा, हमने कॉग्निजेंस ले लिया आपके सवाल का। ठीक, देखिए क्या है नेगी साहब, लेक्चरेट हो तो या किसी टॉपिक पे लिखना हो, बातें सेम है। क्या करोगे सबसे पहले, आप बताओगे कि मैं इस बारे में बात करूंगा। लेट अस से योर टॉपिक फॉर लेक्चरेट इज इंडो यूएस रिलेशंस। आप सबसे पहले ये बोलोगे कि मेरा टॉपिक ये है, देन यू विल ब्रेक डाउन द टॉपिक्स इनटू सम हेड्स, you know, strategic relations or military implications of relations, security aspects, या economic aspects, ठीक है, फिर कल्चरल, सच लाइक थिंग्स, आई मीन जो भी कुछ आप करोगे अपना दिमाग में प्लान है, तो इन चीजों की बातचीत करोगे। फिर कुछ एंड में आप ये बोलोगे कि आप क्या फोर्सी करते हो, रिलेशंस का फ्यूचर क्या होने वाला है, इस तरह से ही लिखोगे, इसी तरह से बोलोगे। एक और बात ध्यान रखिए, जब आप लिखते हैं या कोई बोलते हैं, हमें दिमाग में कुछ थोड़ा-सा रहता है स्टूडेंट सिंड्रोम, कि हम ज़्यादा पॉइंट अगर लिख दें तो हम सोचते हैं ज़्यादा अच्छा है। कुछ ऐसा सिस्टम स्कूल से चला आता है ना, कि ये 5 मार्क का सवाल है तो इसमें 5 पॉइंट कम से कम होना चाहिए। तो तो 5 नंबर मिलेगा, 10 नंबर का सवाल है तो इसमें 10 पॉइंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है। तो 10 पॉइंट देने से अच्छा है, आप 3-4 पॉइंट दे दो, इत्मीनान से समझाओ, अच्छे से समझाओ। देखो आप याद करो, आपने लोगों की जिसकी बात सुनी है, अगर किसी की बात सुन के आपको 2 बात भी बाद में याद रह गई और किसी ने 15-20 बात बोले पॉइंट, और उसके बाद में आप पूछे क्या सुना, उसने क्या बोला, तो तुम बोलोगे यार ध्यान में रह रहा क्या बोला, इम्पैक्ट नहीं था उसका। तो इसका मतलब जिसने 2 पॉइंट भी वर्थव्हाइल दिए, दैट इज मोर इफेक्टिव, इज अ बेटर कम्युनिकेटर, उसने बेटर एक्सप्रेस किए अपने थॉट्स ना। तो हैव दिस पर्सपेक्टिव एंड अकॉर्डिंगली डू। ठीक है, या थैंक यू। Sir, Abhinav Jaswal is just stating, your student, I was your student in 2021, Himachal Wala. I just want to thank you. Still, I am not able to make it to SSB, but you asked me to be proactive in life and in whatever that I do now, I am doing well in IT. चलो, इट इज सो नाइस बेटा, थैंक्स फॉर एक्नॉलेजिंग। आई एम humbled that कुछ सलाह मेरी हेल्प कर पाई। Please keep working sincerely and please remain in touch. So nice of you to have connected again. Fine. God bless. Okay. Abhishek Dikshit is asking, I was previously recommended but got merit out. Now, if the person doesn't know the weaknesses, how can I improve for future? नहीं, वीकनेस तो ऐसा था ही नहीं, तब तो रेकमेंड हुए आप ना, ठीक ठाक ही थे। तो व्हाट यू कैन डू, जो 4 चीज मैंने बोला उनको थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूव कर लो, दैट्स इट, फाइन, डोंट बॉदर, डोंट गेट इनटू इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑल दैट। ठीक ठाक थे तभी रेकमेंड हुए। या थैंक यू। Sir, Ayush is asking, sir, can we say that I have taken drop for NDA in SSB interview? कैन भी से नहीं भाई, देखो प्लीज झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से तुम्हारा भला नहीं होगा, ठीक है ना। झूठ बोलने से मोदी भी भुगतेगा अब, पूरे बोलता रहा 10 साल झूठ, अब लोगों को 10 साल में तो पता चल गया ना झूठा है, भुगतेगा। तो डोंट गेट, ठीक है, सीधी सीधी सच्ची बात है। कैन वी टेल, अरे जो है वो तो बताओगे ना। या थैंक यू। Dipanshu is asking, sir, I am serving in Indian Air Force. Got conference out. Now it's my fifth in our AFSB attempt. Sir, how should I deal with unsupportive group mates? देखिए, हमारा वीडियो देखिएगा स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में, उससे कुछ आइडिया मिलेगा। एक बात मैं रिपीटेडली कहता रहता हूँ कि यू हैव कंट्रोल ओनली ओवर योर थॉट्स एंड एक्शंस एंड नॉट दैट ऑफ अदर्स। फाइन, वो आप डोंट थिंक ए प्रॉब्लम इज लाइंग विद देम,
सी व्हाट इज लाइंग विद यू। क्या आप सेंसिबल बात करते हो? क्या आप कम्युनिकेट ठीक से करते हो? उन चीजों पे फोकस करो। और नहीं बात बन रही, कई बार आपका अटेम्प्ट हो चुके हैं, आपकी रिटन की एबिलिटी ठीक ठाक होगी, तो आ जाओ मेरा गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। थोड़ी डांट वांट पड़ेगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट probably I'll be able to show you the right direction. Effort you will have to put in. Right? So that, yeah, thank you. Okay, Hari Singh is asking, sir, please give your opinion about job layoffs and no jobs in college placement. Even IITs are not getting placed. No news are in. It is there. The situation, see, this is a global situation is also there. Glut हो जाता है जहाँ पे wherever जहाँ पर डिमांड ज्यादा होती है तो लोग उसी तरफ इतने ज्यादा जाने लगते हैं, तो फिर सप्लाई बढ़ जाती है, तो इकोनॉमिक्स में बैलेंसिंग होता है। तो वो होगा, दीज थिंग्स विल बी देयर, बट हिंदुस्तान की अलग कंडीशन हो गई है, यहाँ पे जॉब की मामला खराब ही हो गया हुआ है बिकॉज ऑफ पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी व्हिच हैव बीन फॉलोड फॉर 10 इयर्स। तो इन ये चीजें आपके कंट्रोल में है या नहीं। हम बोलते हैं कि आप उस पर फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है। तो आप बच्चे इन चीजों की परवाह मत करो, है तो है ये रियलिटी। दिस वरी विल नॉट हेल्प यू। You enhance your competence in your field or some related fields where you can really excel, which you have aptitude for, and then you will find that you will be able to get a job and you will be able to grow despite the problems of low employment opportunities and things like that. ठीक है, आप अपना फोकस करिए। या थैंक यू। One last question. या I did BSc Computer Science last year but did not get job. Now preparing for CDS only. Is it fruitful? I have ordered your book. नहीं, सीधे मेरी बुक तो क्या कर देगी। मेरी बुक में रामबाण नहीं है भाई। इट गिव्स यू गाइडलाइंस टू प्रिपेयर ओवरऑल, दैट मच इज देयर। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय बुक। देखिए, बीएससी के बाद अगर आप अच्छे कॉम्पिटेंट हैं तो आपको जॉब मिल जाना चाहिए, क्योंकि जॉब तो मार्केटिंग शार्केटिंग का, अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो, आपकी एबिलिटी ठीक ठाक है, आपको मिल जाएगा। बेटर देन अ जॉब विच एन एमबीए पर्सन विल गेट, बिकॉज इंडिविजुअल का इंटरव्यू होता है। तो दैट इज वन। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो बीएससी एज अ डिग्री एज सच इज नॉट गिविंग यू दैट मेनी जॉब एवरी। तो मास्टर्स कर लेना ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और बाकी मतलब सही सलाह बिल्कुल जो है विच वुड बी यू नो ये तो जनरल बात हुई ना, बिकॉज आई डोंट नो यू। In case you join our program rather than just buying our book, then once I interact with you, I will be able to advise you better. Now, without knowing you, my advice will not be that good. The general advice है कि कोशिश करोगे तो मिल सकता है, और नहीं तो फिर मास्टर्स करो साथ साथ, and keep looking for some work or at least try and do some teaching assignment or something. करना चाहिए, that is a requirement. खाली बैठे हुए सीढ़ी सीढ़ी चक्कर मत लो। Yeah, thank you. That's it. हाँ ये सर, बाकी तो रिपीट कर दिया है एफएस वगैरह। I want to join it. Where is NFA located? It is an online academy, कौशल। तो आप हमारी वेबसाइट में जाइए nofrillsacademy.com and you can check with Yogita and you can join us from there. ये रिपीट कर रहे हैं। हाउ मच मिलिट्री हाँ, नॉलेज इज वो हमने पहले रिक्वायर्ड। आंसर किया था। ठीक है, बस। ठीक है, then all of you, thanks a lot for attending our live session and posting your queries. I hope I have been able to answer your queries to some extent. So please keep following our channel and keep attending our sessions. I like interacting with you people, and wish you all the best. God bless. Take care. Bye bye.